students, we are back with LVC for CA Inter FM. In our previous session, we started with investment decision chapter. उसमें हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में यू हैव टू कंपेयर इनफ्लो एंड आउटफ्लो बट इन रियल टर्म्स. रियल टर्म्स मींस कंपेयरिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. ठीक है, पीवीसीआई को कंपेयर करना है पीवीसीओ से. फिर हमने देखा कि इस चैप्टर में वी हैव टू लर्न 7 डिफरेंट टेक्निक्स दैट विल हेल्प अस इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट. नंबर 1 टेक्निक वाज पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड में हमने ये देखा कि हाउ मच टाइम द प्रोजेक्ट टेक्स टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ओरिजिनल हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस में वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा, दैट इज पेबैक पीरियड. फिर नेक्स्ट टेक्निक वाज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड, नॉर्मल पेबैक पीरियड कैश इनफ्लोस को डिस्काउंट नहीं करता था. Discounted payback period discounts the cash inflow and then you do the cumulation, you do interpolation and find discounted payback period. थर्ड हमने सीखा था accounting rate of return या also known as average rate of return. Accounting rate of return means how much return the project is generating from accounting perspective, from accounting principle, accounting standards point of view. तो उस केस में we learned that we should not take cash inflows, rather you should take net profit after tax. So the formula was average NPAT upon initial investment into 100. फिर next technique was NPV. NPV टेक्निक से ही हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी. NPV is nothing but net present value. That is present value of cash inflows less present value of cash outflows. If it is positive, you accept the project. If it is negative, you reject the project. ठीक है, ये NPV टेक्निक पढ़ी थी. फिर हमने प्रीवियस सेशन में ये भी सीखा था कि हाउ टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोस. इस चैप्टर में बार बार घूम फिर के वी आर कमिंग टू कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. तो हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोस, उसके लिए हमने एक डिटेल्ड फॉर्मेट सीखा था. इट वाज मोर और लेस सिमिलर टू योर इनकम स्टेटमेंट दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर्स. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विल गिव यू एनपीबीडीटी. उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स माइनस करेंगे यू विल गेट profit after tax. We will add back the depreciation and we get cash inflow from operations. Depreciation minus करके Q plus करना था, उसका लॉजिक आई एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस सेशन. इस इनकम स्टेटमेंट में हम इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह माइनस क्यों नहीं करते, उसका भी लॉजिक आई एक्सप्लेन्ड यू इन आवर प्रीवियस सेशन. ठीक है, फिर we started with some special adjustments that you need to consider, you need to take care of while calculating the cash flows. तो उसमें adjustment number 1, let me just share my screen. Adjustment number 1 was all about depreciation. So we learned that इस चैप्टर में depreciation का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. Depreciation in itself is of no use because it is a non-cash expense. इस चैप्टर में हम जो कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लोस जो होता है उसकी बातें करते हैं. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन इन इटसेल्फ इज ऑफ नो यूज, बट डेप्रिसिएशन के वजह से जो टैक्स की बचत होगी थोड़ी बहुत, दैट इज ऑफ यूज. ठीक है, सो दैट इज रेलेवेंट फॉर अस. सो दिस वाज स्पेशल एडजस्टमेंट नंबर 1. फिर हमने देखा कि मान लो प्रोजेक्ट में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगता है फ्यूचर में. हाँ, इनिशियल ईयर यू इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, बट मान लो लेट्स से आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years यू नीड सम मोर इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू स्मूथली. तो कहना है उस कैश आउटफ्लो को भी आपको डिस्काउंट करना है. ठीक है, सो दैट वाज स्पेशल एडजस्टमेंट नंबर 2. स्पेशल एडजस्टमेंट नंबर 3 वाज अपॉर्चुनिटी लॉस इन इनकम. ये प्रोजेक्ट के लेने के वजह से इफ यू टेक अप द प्रोजेक्ट
and due to taking up the project, if there is any loss in income, if there is any opportunity loss in income, तो आपका नुकसान होगा. वाई? बिकॉज आपने प्रोजेक्ट लिया इसलिए ये लॉस हो रहा है. लॉस मीन्स नुकसान, नुकसान मीन्स एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स आउटफ्लो. क्लियर? अगर इफ यू रिकलेक्ट, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ फार्म रेंटल इनकम. फिर हमने स्पेशल एडजस्टमेंट नंबर डी देखा था, सेविंग्स इन कॉस्ट. अगर प्रोजेक्ट के वजह से इफ देर इज एनी सेविंग्स इन कॉस्ट, सेविंग्स मीन्स फायदा, फायदा मीन्स इनकम, इनकम मीन्स इनफ्लो. ठीक है? सो यू हैव टू कंसिडर दैट सेविंग्स इन कॉस्ट एज इनफ्लो. If you recollect, I gave example of savings in labor cost due to buying of a new technological advanced machine. मशीन के आने की वजह से लेबर की अब जरूरत नहीं थी, तो जो लेबर कॉस्ट का जो फायदा, जो बचत होती है, वो प्रोजेक्ट के वजह से फायदा हो गया. ठीक है? फिर भी ऑल्सो लर्न अबाउट संक कॉस्ट. वेदर यू टेक द प्रोजेक्ट और नॉट, संक कॉस्ट इज डूबा हुआ कॉस्ट. आपको इनकर करना ही करना है. यू कैन नॉट रिकवर दिस कॉस्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज इररिलेवेंट. आप प्रोजेक्ट ना भी लो, स्टिल यू हैव टू बेयर दिस कॉस्ट. आई एक्सप्लेन यू हाउ शुड बी द थॉट प्रोसेस इन डिसाइडिंग वेदर द कॉस्ट इज रेलेवेंट और नॉट. ठीक है? इसमें एग्जांपल दिया था प्रोफेशनल फीस पेड टू सीए फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. R&D कॉस्ट का भी एक एग्जांपल दिया था. लास्ट वी लर्न अबाउट वर्किंग कैपिटल. Working capital investment. I told you that for smooth running of any business, for smooth running of day-to-day business, you need additional capital in the form of working capital. ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कर लिया, मशीनरी वगैरह, ऑफिस वगैरह, फैक्ट्री लैंड वगैरह सब सेटअप कर लिया, but you need additional capital in the form of inventory, in the form of labor for running day-to-day business operations. So that additional investment is called working capital. So working capital प्रोजेक्ट के शुरुआत में ही, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ही आपको इन्वेस्ट करना है अलॉन्ग विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है? सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटफ्लो. बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, when the project ends, जब प्रोजेक्ट का अंत आएगा, working capital will get released and it will be considered as an inflow at the end of project's life. अब सर इसको इनफ्लो क्यों माने, वो रिलीज क्यों होगा? कैन आई से वर्किंग कैपिटल आइडियली इज नथिंग बट CA minus CL, करंट असेट लेस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल. ठीक है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल. सो कैन आई से इन अदर वर्ड्स, इट इज वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट अमाउंट ब्लॉक्ड इन योर डेटर्स, amount blocked in your inventory, amount in your cash bank balance. Correct? That is working capital. So जब प्रोजेक्ट एंड होगा, कैन आई से इसमें जितने भी डेटर्स होंगे वो सारे पैसे चुका देंगे. Are you following everyone? They all will pay up all the balance due at the end of the project. फिर जो भी इन्वेंट्री स्टॉक में होगी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, वो भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तब भी प्रोजेक्ट एंड होगा. अंडरस्टैंडिंग? सो ऑल द वर्किंग कैपिटल विल गेट रिलीज्ड एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ. मीन्स इन अदर वर्ड्स, working capital investment is a temporary investment till you run your business, till you run your project. एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो डेटर से सारे पैसे आ जाएंगे, इन्वेंट्री से सेल, इन्वेंट्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेल्स, वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, सेल से पैसा मिलेगा. क्रेडिटर्स जो करंट लायबिलिटी में होंगे उसको पैसे चुका देंगे. सो एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड अप, एवरीथिंग विल बी स्क्वेयर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स व्हाई रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल is considered as an inflow at the end of the project. जब आप प्रोजेक्ट अंत करने जा रहे हो ना, तब ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा. Are you following everyone?
So this was special adjustment number कौन सा था 6 वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेशल एडजस्टमेंट नंबर 7 एलोकेशन ऑफ कॉमन कॉस्ट एलोकेशन बोलो या अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट बोलो ठीक है अगेन वन ऑफ a unique adjustments that you need to take care of while calculating cash inflow outflow ठीक है अब आपने आई गेस इन कॉस्टिंग पेपर अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में कुछ सीखा होगा अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट मींस लेट्स से let me explain this through an example let's say there is an HO हेड ऑफिस है ठीक है हेड ऑफिस के साथ साथ कंपनी इज हैविंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स A B C D E अब हेड ऑफिस में कुछ लोग काम करते होंगे हेड ऑफिस में देयर वुड बी सम एम्प्लॉइज ठीक है दिस एम्प्लॉइज आइडियली वुड बी वर्किंग अप फॉर ऑल द ब्रांचेस टुगेदर यस और नो कुछ लोग ऐसा होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे ब्रांचेस का काम करते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग जैसे ICAI हेड ऑफिस इज एट दिल्ली सो सम एम्प्लॉइज ऑफ ICAI वुड बी वर्किंग फॉर ऑल द ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया ठीक है सो इनका जो भी खर्चा होता है हेड ऑफिस का आइडियली हेड ऑफिस इज वर्किंग फॉर ऑल द ब्रांचेस सो कैन आई से लेट्स से हेड ऑफिस का टोटल पर ईयर खर्चा इज 10 लाख सो व्हाट प्रैक्टिकली हेड ऑफिस डज यू नो ये 10 लाख है ना 10 लाख खर्चा हुआ हेड ऑफिस का उन्होंने काम किया पांचों ब्रांच के लिए सो दे अपोर्शन दिस आइदर इक्वली और इन सम ratios to all the branches are you following but for the time being for the sake of simplicity let's assume कि HO ने हेड ऑफिस में जितने भी बंदे हैं जितने भी एम्प्लॉयज है सबने इक्वली काम किया फॉर ऑल द ब्रांचेस ठीक है सो दिस 10 लाख ऑफ कॉमन कॉस्ट दिस 10 लाख इज कॉमन कॉस्ट फॉर ऑल द ब्रांचेस ठीक है सो इट गेट्स अपॉर्शनड इक्वली टू 5 ब्रांचेस Are you following any doubt still here? ये clear हुआ? This is called as apportioning of common cost. Clear till here? Now very important. Now let's say ICAI or you are planning to start a new branch, branch F. ठीक है नई ब्रांच ओपन की ब्रांच F. तो कैन आई से नाउ दिस ऑल HO employees will work for branch F as well correct they will work for branch F as well but even though they are working for branch F इनका जो पूरे साल का अमाउंट है ना खर्चा जो भी पूरे साल का है वो एज इट इज रहा है 10 लाख का 10 लाख ही रहा है आर यू फॉलोइंग आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से currently HO was working for 5 branches A B C D E टोटल खर्चा था 10 लाख तो 2 लाख was apportioned to all the branches equally but अब नई ब्रांच भी सेटअप हुई है इट मींस न्यू प्रोजेक्ट was taken by the company branch F अब can I say HO वाले employees will work for branch F as well correct but even though they are working for branch F ये कॉस्ट एज इट इज रहा ये HO का कॉस्ट 10 लाख का 10 लाख रहा तो कैन आई से द ओनली डिफरेंस ओवर हियर वुड बी नाउ इंस्टेड ऑफ अपॉर्शनिंग 10 lakh to 5 branches this 10 lakh will be apportioned to 6 branches now yes or no are you understanding so can I say अब apportionment to each branch कितना होगा 10 lakh divide by 6 10 lakh
divide by 6. Can I say each branch will now get allocation of 1.67 lakh each? Correct. So now tell me, can I say we have taken a new project of setting up branch F? उसमें HO का कॉस्ट आ रहा है 1.6 lakh. Is this relevant for the project or not? This is my question to you all. Branch F को allocate हो गया 1.67 lakh. But is this relevant for the project F or not? Tell me. This is the whole question. ये expense side दिखेगा कि नहीं दिखेगा? What is your opinion? आप लोगों को क्या लगा? गौतम says yes. Daksh is also saying yes. Achal is saying yes. Gayatri is saying yes. Okay. All of you are wrong. Amar, wrong. Reason is, again I told you, thought process आपकी क्या होनी चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट लेने से is this cost increasing? क्या 10 प्रोजेक्ट यानी कि ब्रांच एफ लेने से ये 10 लाख बढ़ रहा है? 10 लाख तो एज इट इज ही रहा. अगर ये ब्रांच ना भी होती फिर भी एचओ का कॉस्ट 10 लाख ही था. Only proportion of apportionment is changing. This cost is not increasing because of taking the new project. Are you following? सिर्फ apportionment, allocation का proportion change हुआ. बट क्या ये 10 लाख प्रोजेक्ट एफ के वजह से बढ़ गया है? क्या ये 10 लाख आर वी इंकरिंग दिस 10 लाख बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट एफ? नो. इवन इफ देयर वाज नो प्रोजेक्ट एफ, स्टिल ये 10 लाख का 10 लाख ही होने वाला था. Understanding? So this is the point that capital budgeting says. Even though you take up a new branch, your common cost is not increasing. So it is irrelevant for the project. Understood the logic? Yes, not increased. प्रोजेक्ट के वजह से ये 10 लाख नहीं बढ़ा है, या प्रोजेक्ट के वजह से हम ये 10 लाख इनकर नहीं कर रहे हैं. ये प्रोजेक्ट एफ नया ना भी होता ना, स्टिल वी वुड हैव इनकर 10 लाख ओनली. हाँ, सिर्फ एलोकेशन का अमाउंट इज गेटिंग चेंज्ड. आर यू फॉलोइंग? ए वेयर कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. ये पूरे कंपनी का कॉस्ट तो 10 लाख का 10 लाख ही है ना. हाँ गौतमी, परफेक्ट. नाउ द पॉइंट इज दैट ओनली, अगर मान लो ये प्रोजेक्ट एफ के वजह से 1 लाख बढ़ जाता एचओ का कॉस्ट, then you should allocate this 1 lakh. Why? Because this 1 lakh common cost increase specifically because you took up the project. Understood? So वो 1 lakh आपको लेना है. Followed? Everyone? So common allocation cost का special adjustment is, if the common cost does not increase because you are taking the project, then you have to ignore it. Is irrelevant. But if common cost increases because of taking up the project, then to that extent you have to add it in the expense side. ठीक है? रेशियो ऑफ अपॉर्शनमेंट वेरीज. यस, प्रपोर्शन वेरी हो जाएगा, बट ये सबका टोटल करे तो 10 लाख का 10 लाख ही रहा ना. कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट तो नहीं बढ़ रहा है प्रोजेक्ट के वजह से. सो यू हैव टू इग्नोर. हाँ, प्रोजेक्ट लेने के वजह से कुछ कॉस्ट बढ़ रहा है, देन टू दैट एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज यू हैव टू एलोकेट टू द प्रोजेक्ट. ठीक है? सो स्पेशल एडजस्टमेंट फॉर कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट इज if common allocated cost does not increase due to taking up a new project, then that allocated cost, यानी कि ये जो 1.67 लाख अपॉर्शन हुआ है ना अपने प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट एफ पे, दैट इज इररेलेवेंट फॉर अस. हम कहीं पे भी उसको एक्सपेंस में नहीं लेंगे. एंड अगर वो एक्सपेंस में इंक्लूड हो गया है तो उसमें से एक्सक्लूड करना है. ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन?
So it is irrelevant. But if common cost increases specifically due to taking up the project, then to such increase, ठीक है, तो जितना इंक्रीज हो रहा है दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, टू सच इंक्रीज इट इज रेलेवेंट फॉर प्रोजेक्ट. Clear everyone? So ideally, if question is silent, you have to assume कि common cost increase नहीं हो रहा है unless question specifies something else. ठीक है? So you have to ignore common apportioned cost. But उस cost में specifically project के वजह से कुछ increment हो रहा है, then to that extent of increment, you have to consider that cost in expense side. Clear everyone? So this was special adjustment number 6, number 7, apportionment of common allocated cost. Everyone clear till here? There is one more very important special adjustment about capital gains based on the concept of block of assets. But before we understand that, let's try and solve some practical problems. जो अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट सीखे, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व थ्रू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम मॉड्यूल. ओके, सो एवरीवन प्लीज ओपन योर मॉड्यूल. मॉड्यूल 2 में है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ये क्या खुल गया? पेपर 6 सेक्शन ए मॉड्यूल 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. Let's come to page number 7.29. Illustration number 4. ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposals for the purchase of equipment. The company uses net present value technique to evaluate the project. यानी कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एनपीवी मेथड, ठीक है. सो एनपीवी इज नथिंग बट पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ. सो ये सारे प्रोजेक्ट का हमें पीवीसीआई ढूंढना है, ये सारे प्रोजेक्ट का हमें पीवीसीओ ढूंढना है. देन वी विल फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड वी विल सी हाउ which project to be selected. The capital budget is limited to 5 lakh, which ABC believes is the maximum. Initial investment and projected net cash inflow for each project are shown below. ये कहना है से इस क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको कैश इनफ्लो ही दे दिया है. यस और नो? सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, डायरेक्ट जो कैश इनफ्लो चाहिए वो ही दे दिया आपको. ठीक है, सो नो नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%. The cost of capital, it is WACC. Cost of capital माने WACC. So can I see, in other words, they are giving you the discounting rate as well. See, to calculate present value, I told you two things are very important. Two variables are very important. One is cash inflow, one is discounting rate. दोनों दे दिया है.
and this discounting rate would be given in all the questions of capital budget. ठीक है? You are required to compute the NPV of different projects. Okay, let's calculate NPV of different projects. Illustration number 4, page 7.29 from module. ठीक है? So let's first target project A. NPV is nothing but, I'm just writing the formula, PVCI, present value of cash inflows minus present value of cash outflows. So cash inflows, 5 years is the life of the project. नीचे है, कुछ और नहीं है. So 5 years is the life of all the projects. So यहाँ पे year लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflows is 50, 50, 50, 50, 50. 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000. ठीक है? Discounting rate is 12%. So can you calculate PVCI at 12% for each of the year's cash inflow? How to solve it on Calci? So take 50,000 in your Calci, divided by 1.12, press equal to 1 times. So you will get present value of year 1. ठीक है? फिर 50,000 divided by 1.12, press equal to 2 times. You will get present value of cash inflow for year 2. वैसे year 3, year 4, year 5 आप कैलकुलेट करो. And tell me how much is total PVCI. Is this, ये फर्स्ट ईयर का बोला आपने? ओके, 44,643. फिर सेकेंड ईयर I don't have Calci, so you need to calculate by yourself and tell me. Yeah, I am waiting for your response. Huh? Total is 182.37 as per Daksh. Other students, please check. यही आ रहा है 39,859. I believe this is for year 2. 859 को 860 कर देता हूँ. You can take 2 decimals also, no worries. फिर ईयर 3 को डिस्काउंट करना हो तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1.12, प्रेस इक्वल टू 3 टाइम्स. 35,589, 31,775, 28,371, and I hope the total is coming to 180,237. ठीक है? So PVCI is done. Less PVCO करेंगे. ये कहना है से प्रोजेक्ट ए requires initial investment of 2 lakhs and ये 2 लाख आज के आज ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके प्रोजेक्ट ए स्टार्ट होगा. 9,860. ओके, 180,238. ठीक है, चलेगा. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट ए इज 2 लाख. वो आज के आज ही लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में. सो आज लगाया हुआ 2 लाख, कहना है उसकी वैल्यू 2 लाख की रहेगी. सो नो नीड टू डिस्काउंट पीवीसीओ, नो नीड टू डिस्काउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन. वाई? बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट आज एट ईयर 0 हो रहा है. ठीक है. सो कहना है से एनपीवी इज कमिंग टू नेगेटिव. यस और नो? कितना आया नेगेटिव? यस, करेक्ट, 19,763. सो एनपीवी का रूल ये था, इफ एनपीवी इज नेगेटिव यू स्ट्रेट अवे रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट के सामने देखने का भी नहीं.
ठीक है, मुंह दिखाई नहीं करने की वो प्रोजेक्ट के सामने, ठीक है। सो प्रोजेक्ट ए शुड बी रिजेक्टेड, करेक्ट। एवरीवन फॉलो टिल हियर, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? अब है ना, कुछ मैं आपको ट्रिक्स, यू कैन से देयर आर सम ट्रिक्स to solve the same problem. Not tricks, but some other way. Not exactly tricks, but some other way. ए, आपने फर्स्ट ईयर को डिस्काउंट कैसे किया? 50,000 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू 1, करेक्ट। तो इसको मैं, कैन आई राइट दिस वे एज वेल? विल माई आंसर चेंज इफ आई राइट 50,000 इंटू 1/1.12 रेस टू 1? बोलो, क्या आंसर में चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है। सो टेक्निकली कैन यू कैलकुलेट दिस ऑन कैलसी? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू 1, उसका आंसर कितना आ रहा है? दिस पोर्शन, द वन दैट आई हैव हाइलाइटेड इन ग्रीन। 1 डिवाइडेड बाय 0.8929, ठीक है। तो ये जो 0.8929 आया ना, उसको टेक्निकली वी कॉल इट एज डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1 एट 12%। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1 एट 12%, ठीक है। सो कैन आई से टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1, you simply multiply cash inflow with discounting factor. Are you understanding this? 50,000 is cash inflow. You simply multiply it with discounting factor and you will get present value of cash inflow. सर ये क्यों समझा रहे हो? समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि इन मैनी ऑफ द क्वेश्चन ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपको डायरेक्ट दे दिए होंगे क्वेश्चन में। Many question will directly give you this discounting factors in the question itself. तो हमें फिर कैलसी पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई दैट विथ कैश इनफ्लो, यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू। आर यू फॉलोइंग एवरीवन? बट ये आपको पता होना चाहिए ना कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर एवरीवन? सो 0.8929 इज नथिंग बट called as discounting factor of year 1 at 12%. Clear? ठीक है, okay. So likewise, can you calculate discounting factor for year 2 as well? year 2 का कैसे होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू 2, कितना आया? सी इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज की टेक 2 डेसिमल्स तो 2 डेसिमल्स लेने का। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, आई पर्सनली एडवाइज टेक अप टू 4 डेसिमल्स। राउंड ऑफ नहीं, टेक अप टू 4 डेसिमल्स। 0.7120, सॉरी 0.7971। थर्ड ईयर 0.7120, 0.6355, 0.5674, ठीक है। क्लियर? दिस ऑल आर कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट 12% for their respective years. Clear? So in many of the question, they will directly provide you these discounting factors. Simply multiply it with their respective year का cash inflow. You will directly get PVCI. Understood till here? Okay. और एक चीज समझानी है। अब ये जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, ये सबका टोटल करो। जस्ट एड ऑल दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ, नहीं दिया है तो ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट हाउ। नहीं दिया है तो आप पीवीसीआई कैसे ढूंढोगे? ऑब्वियसली इन दैट केस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। प्लीज डू सम ऑफ ऑल दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये सब डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड करो।
कितना आ रहा है? 3.6047. Everyone is getting this 3.6047. So this 3.6047 that you calculated is technically called as प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, पीवीएएफ बोलते हैं इसको. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर at 12% for 5 years. Understood everyone? ए 6069 की 47 अलग अलग क्यों आ रहा है? You have to simply add up in the calci. Is it 6069 की 4 इसका 49 आया? 6049. ये जो मैंने लिखा है, जो आपने बोला वही मैंने लिखा ना, कि कुछ अलग लिखा मैंने? ठीक है, एनी विच वेज दैट इज नॉट द होल पॉइंट. प्रिंसिपली द पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज सम ऑफ ऑल डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज एन्युटी फैक्टर. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? PVAF is nothing but sum of all the discounting factors. ठीक है सर, आपने ये सम करवाया क्यों? ये 3.6047 ढूंढने का मकसद क्या था? द मकसद वॉज मल्टीप्लाई दिस विथ 50,000. 6069 है, ओके. इफ 49 है कि एग्जैक्ट कितना है? 3.6049 है कि 69 है? जो भी हो, 50,000 इंटू 3.6049 करो तो 50,000 इंटू 3.6049 कितना है? 180,235. So can I say this amount was nothing but your PVCI वाला अमाउंट? देखो PVCI आया था 180,238, 180,235. अंडरस्टूड? सो PVCI, कैन आई से उसकी फॉर्मूला बन गई. इट इज नथिंग बट कैश इनफ्लोज इनटू PVAF फैक्टर. Are you following? So PVCI is nothing but cash inflows into PVAF factor. Clear? शॉर्टकट टेक्निक. पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. Simply take cash inflows multiplied by PVAF factor. You will directly get PVCI. ठीक है? But again, there is some terms and conditions. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? हाँ, दिस इज एक्सेप्टेड मेथड, फुल मार्क्स ही मिलेंगे. टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कैश इनफ्लो पर एनम शुड बी कांस्टेंट. तब जाके आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. मान लो कैश इनफ्लो इज डिफरेंट एवरी ईयर, तो यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला विल वर्क ओनली व्हेन द कैश इनफ्लोज एवरी ईयर आर कांस्टेंट. अंडरस्टूड? यूनिक नहीं, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो. यूनिक नहीं, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो, सेम थ्रू आउट द लाइफ. तब जाके आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन सेव आई गेस 2-3 minutes इन सॉल्विंग एंटायर टेबल. ठीक है, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. टेक कैश इनफ्लोस पर एनम multiplied with PVF factor, you will get PVCI. But this formula comes with hidden terms and condition. ये formula will work only when above formula will work only when cash inflows are uniform or are constant throughout the life of the project. Throughout the life of project. Clear everyone? So discounting factors क्या होते हैं वो समझ गया.
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है वो समझ गया, इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, ठीक है। पीवीएएफ कब यूज करना है वो समझ गया, व्हेन द कैश इनफ्लोज आर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। सर अगर यूनिफॉर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो तो क्या करने का, तो यू हैव टू प्रिपेयर द टेबल, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए के कैलकुलेशंस में आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस टेक्निकल टर्म्स, सो आई एक्सप्लेन्ड प्रोजेक्ट ए इन वेरी डिटेल्ड वर्जन। अब आते हैं प्रोजेक्ट बी। सी प्रोजेक्ट बी वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला नाउ, व्हाई, बिकॉज कैश इनफ्लोज आर नॉट कांस्टेंट। प्रोजेक्ट सी के लिए यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला, प्रोजेक्ट बी के लिए भी अगेन यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला। तो उस केस में क्या करने का, टेबल बनाने का और सॉल्व करने का। क्लियर? So let's come to project B now. Hey, are you comfortable with my कितने डेसिमल्स पे राउंड ऑफ किया है, but ठीक है। Less PVCO. PVCO for project B, how much is the investment needed? PVCO 1,90,000. No discounting to PVCO. Sorry, no discounting to initial investment because वो आज के दिन ही पैसा जाने वाला है, ठीक है। So 1,90,000 will be subtracted. So NPV comes to पॉजिटिव आएगा। कितना आया पॉजिटिव? वेयर आर अदर स्टूडेंट्स गॉन? आप सब कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 215,490 माइनस 190, 25,490 पॉजिटिव, ठीक है। दे वुड हैव राउंडेड ऑफ टू डेसिमल्स, बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। यू कैन टेक अप टू 4 decimals, you can take all the decimals as well, that is fine. So project B is having positive NPV. Clear? Let's move to project C. एक भी ना लो तो मीन्स, हाँ मतलब दैट्स ऑल्सो फाइन। लेट्स से 40,000 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू 1 कितना आया? कितना आ रहा था? 35 समथिंग आ रहा था। 35,714. So this you can round it off to nearest rupee. That is also fine. Huh? See, at the end, institute is checking you principally. ठीक है? So your principal is correct. You are discounting the future. You are discounting the future cash inflows. So 35.714 you round it off. That is fine. ठीक है? So थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे चलता है। हाँ ये 2,15,000 का 1,15,000 नहीं होना चाहिए, वो रॉन्ग हो जाएगा। 215,490 है तो 215,500 is okay, 215,600 is okay, depending on the round off that different students would have done, that is fine. But 215 का 230 नहीं हो जाना चाहिए, 2 lakh नहीं हो जाना चाहिए, this is not fine. Understood everyone? Clear? So let's move to project C now. Project C, again same 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflows each year is 75, 75, 60, 81 lakh. 75, 75, 60, 80 and 1 lakh. Again, you will discount at 12%. You will get some PVCI and उसमें से we will subtract PVCO. Investment amount required in project C is 2,50,000. और वो आज के दिन ईयर 0 में ही इन्वेस्ट होगा, सो नो डिस्काउंटिंग, एंड यू विल गेट एनपीवी 277,045.
277,045, तो प्लस 27,045. आई एम ट्रस्टिंग योर कैलकुलेशंस. आई एम बिलीविंग कि यही आपने सही कैलकुलेट किया होगा कैलसी पे. ठीक है. क्लियर फॉर प्रोजेक्ट सी एवरीवन. हाँ बोलो केतन, यू कैन राइट योर क्वेरी ऑन द चैट बॉक्स. मूविंग फॉर प्रोजेक्ट डी. Year 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflow for project D is 2 lakh 10, sorry, 75, 75, 60, 40, 20. 75, 75, 60, 40, 20. ठीक है. Again, you will discount all the cash inflows at 12%. You will get some PVCI. इसमें से we will subtract PVCO. Investment in project D required is 2 lakh 10. 206, 229 means 230. ठीक है. 2 lakh 10 का इन्वेस्टमेंट लगेगा. And here in this case NPV comes to negative 3770. So from the four projects A and D are straightforward rejected. ठीक है. Why? Because they are having negative NPV. Clear everyone? So D and A are having negative NPV. You will straightforward reject project A and D. You will select project B and C. Clear? So NPV का एटलीस्ट बेसिक क्लियर हुआ. हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी. बस पूरे चैप्टर में in most of the question you have to find NPV because I told you it is highly asked, highly used and very important technique, very practical as well. ठीक है. हाँ अब सारे क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट, स्पेशल एडजस्टमेंट्स की बात होगी. कंक्लूजन अगर पूछा हो तो लिखने का. अगर इसमें पूछा है विच प्रोजेक्ट यू विल सिलेक्ट फ्रॉम ऑल दिस फोर. So we will say project B and project C should be selected because it is having positive NPV. But अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि you have to select only one project from all the four, अगर ऐसा पूछा है कि चार में से एक ही प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो in that case you will select that project which is having highest NPV. ठीक है. बट अगर ऐसा पूछे विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, तो प्रोजेक्ट बी एंड डी शुड बी सिलेक्टेड एज इट इज हैविंग पॉजिटिव एनपीवी. अगर इफ क्वेश्चन से इसकी नहीं 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 ऐसा नहीं, चार में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो इन दैट केस सिलेक्ट विद हाईएस्ट एनपीवी. यस, डिस्काउंटिंग सिंपली मैंने बोला ना, फ्यूचर के सारे कैलकुलेशंस को आज के तारीख में लेके आ रहे हैं. दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज डिस्काउंटिंग. दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग. सारे फ्यूचर कैलकुलेशंस को आज के डेट पे लेके आ रहे हैं. टुडे, दिस इज टुडे. ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज आर ब्रॉट एट टुडेज पॉइंट एंड देन वी आर डिसाइडिंग whether to accept the project or not. That is simple NPV technique. Clear? So if NPV technique is understood, technique number 5, profitability index is very simple. अगर एनपीवी आ गया तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय पीआई. इसके दो और पेट नेम थे. पेट नेम नंबर 1 वाज डिजायरेबिलिटी फैक्टर. कुछ लोग इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर से बुलाते हैं, कुछ लोग इसको प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड से भी बुलाते हैं. ठीक है. सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की फॉर्मूला इज
PVCI अपॉन PVCO, सिंपल। अगर एनपीवी, इसलिए मैंने बोला अगर एनपीवी आ गया तो पीआई इज वेरी सिंपल फॉर यूर, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ ही करना है। एनपीवी में भी यही दो वेरिएबल थे, उसमें पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ था, इसमें पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ है। आर यू फॉलोइंग? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में अलग से कुछ ढूंढना नहीं है, द सेम वेरिएबल्स ऑफ एनपीवी विल बी यूज्ड इन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ गए, फॉर्मूला भी समझ गए, इट इज वेरी सिंपल, बट हाउ टू इंटरप्रेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हाउ, इसमें जो पीआई का जो भी आंसर आए उसको समझे कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स टेक प्रोजेक्ट बी एंड सी हमने सिलेक्ट किया था, सो लेट्स कैलकुलेट प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी का पीआई। ठीक है, दिस इज आवर इलस्ट्रेशन। प्रोजेक्ट बी में हमारा पीवीसीआई कितना आ रहा था, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट पीआई इज ट्राइंग टू से अस। प्रोजेक्ट बी में था पीवीसीआई वाज 215,490, पीवीसीओ वाज 190, सो 215,490 डिवाइड बाय पीवीसीओ वाज 1,90,000। बोलो कितना है आंसर? 1.1341 upon 1। Clear? Likewise, let's solve for project C। उसमें पीवीसीआई कितना था? पीवीसीआई था प्रोजेक्ट सी में आई गेस 277,045, PVCO was 250, so therefore PI comes to 1.1082 upon 1। ठीक है, नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दिस आंसर, ये जो आंसर आया हाउ टू इंटरप्रेट दैट, क्या लग रहा है क्या होगा? इंडेक्स विच सेज अबाउट, ए व्हाट इज दिस, ये वो स्टॉक मार्केट वाला इंडेक्स नहीं है, यू हैव प्रेजेंटेड सम स्टॉक मार्केट वाला ग्राफ, ये वो स्टॉक मार्केट वाला इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, दिस इज नॉट निफ्टी और सेंसेक्स वाला इंडेक्स। सो पीआई का डिसीजन मेकिंग रूल इज, if it is greater than 1 you accept the project, if it is greater than 1 you accept the project, if it is less than 1 you reject the project। ठीक है, इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन इज, 1 रुपया मैंने बिजनेस में लगाया, 1 रुपया मैंने प्रोजेक्ट में लगाया, हाउ मच इनफ्लो that project is generating, so it is generating 1.1341 in present value terms। Understood? This is how you interpret PI। 1 रुपया लगाया, 1 रुपये के सामने इनफ्लो कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना 1 से, सो यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? 1 रुपया लगाया बिजनेस में, यू आर गेटिंग इन रिटर्न 1.1082 in the form of inflow, and that too in present value terms। So this is how you interpret PI। 1 रुपया लगाने पे कितना सामने इनफ्लो मिल रहा है इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। इफ इट इज मोर देन 1 ऑब्वियसली यू विल एक्सेप्ट, इफ इट इज लेस देन 1 ऑब्वियसली यू विल रिजेक्ट, if it is 1 by 1 you can do anything, you want to accept you accept, you want to ignore you can ignore as well। एक्सेप्ट करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन रिजेक्ट ऑल्सो। लेट्स से द प्रोजेक्ट इज इन सम कंट्री जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है और 1:1 आया, तो बोलो आप वो एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? सो इन दैट केस सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो सीन, नॉट जस्ट फ्रॉम मॉनेटरी फैक्टर्स वी डिसाइड। सो उस केस में हम देखेंगे कि उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, उस कंट्री में अगर प्रोजेक्ट करे
तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी वहां की? ये सारे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, एंड देन प्रोजेक्ट इज आइडियली सिलेक्टेड. Understood, everyone? But from FM perspective, we are selecting the project from financial factors, from monetary factors. बाकी सारे फैक्टर्स को तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे. Are you following, everyone? So PI का decision making rule is, if it is greater than one, accept the project. PI is less than one, reject the project. Clear? This is a simple डिसीजन मेकिंग फंडा फॉर पीआई. पीआई में और कुछ भी नहीं है, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ करना है, और कुछ नहीं करना है. सो विद दिस वी कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक एज वेल. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक के लिए आप डिपेंडेंट रहो एनपीवी पे. एनपीवी ढूंढ लिया तो बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट में पीआई भी निकल ही जाएगा. ठीक है. लेट्स कम टू टेक्निक नंबर 6. One of the important techniques, IRR technique. हाँ, 2 टेक्निक नहीं, 3-4 भी पूछ सकते एक क्वेश्चन में. Not just 2, they can ask 3-4 techniques as well. Internal rate of return. Technique number 6 is IRR technique. Internal rate of return. ठीक है. इस टेक्निक पे पहले तो कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड सम रेट. ठीक है. यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं ढूंढना है, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड सम रेट जो परसेंटेज में होगा. क्लियर. सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट डिस्काउंटिंग रेट. I am repeating, internal rate of return, IRR, is that discounting rate where your PVCI is exactly equal to PVCO. It is that rate of return which equates your PVCI to PVCO. Understanding? So IRR क्या होता है? IRR वो डिस्काउंटिंग रेट है जहां पीवीसीआई और पीवीसीओ एग्जैक्टली सेम होंगे. ठीक है. इन माय फाइनल ईयर, विच फाइनल ईयर? फाइनल ईयर ऑफ, ओके, ग्रेजुएशन. अच्छा अच्छा, गॉट इट. हाँ हाँ. Yes, in loose language, in loose layman terms, you can say a rate of return that breaks even, means जहां इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो. ठीक है. सो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड दैट डिस्काउंटिंग रेट. हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए? उस डिस्काउंटिंग रेट को ढूंढने में होना चाहिए जो डिस्काउंटिंग रेट इक्वेट करे पीवीसीआई और पीवीसीओ को. ठीक है. सो अंडर आईआरआर मेथड आपको कोई अमाउंट नहीं ढूंढना है, आपको एक रेट ढूंढना है. वो रेट ढूंढना है, ठीक है, जहां पीवीसीआई विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पीवीसीओ. वो रेट ढूंढने की आपको मेहनत करनी है. आर यू फॉलोइंग? ठीक है. If PVCI is equal to PVCO, can I say in other words, it is nothing but PVCI minus PVCO is equal to 0? Yes or no? PVCO को मैं LHS में लेके जाता हूं. Correct? So in other words, can I say it is that rate where NPV is equal to 0? PVCI minus PVCO क्या है? It is NPV only. Clear? So IRR is actually that discounting rate where your NPV is 0. Clear, everyone? IRR का मतलब क्या है वो क्लियर हुआ? हाँ, ढूंढना कैसे वो we will learn. But first you should understand what it means. हाँ, PI is equal to 1. You can say PI is equal to 1. PVCI is equal to PVCO. It means PI is equal to 1. It means NPV is equal to 0.
Clear till here? So if meaning is understood, so now let's jump to how to find that discounting rate, how to find IRR. So to calculate IRR, we will do permutation combination. We will do trial and error. ठीक है? Trial 1, let's say 10% discounting rate होता, तो एनपीवी कितना आ रहा है? We will check. क्या एनपीवी 0 आ रहा है 10% में? If yes, then 10% is our IRR. अगर 10% पे एनपीवी 0 नहीं आ रहा है, तो ट्रायल वी विल मूव टू ट्रायल 2, 15%. चेक, 15% पे एनपीवी 0 आ रहा है, गुड, आईआरआर इज 15%. नहीं आ रहा है, ट्रायल 3, चेक एनपीवी 0 और नॉट. नहीं आ रहा है, ट्रायल 4, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर? सो वी विल यूज ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड. ऐसा है, हार नहीं माननी है. ठीक है? बट आई विल एक्सप्लेन यू अ ट्रिक, अ टेक्निक, जहां मैक्सिमम 2 ट्राई में आपका आंसर आ ही जाएगा. 2 से ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? वैसे मैं आपको सिखा दूंगा. बट प्रिंसिपली डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आईआरआर? ट्रायल एंड एरर करो ना. टेक डिस्काउंटिंग रेट, रैंडम डिस्काउंटिंग रेट 8%. 8% पे चेक करो, एनपीवी 0 आ रहा है, योर ट्रायल, योर तुक्का, बुल्सआई, you hit bullseye. So IRR is 8%. ओ सर 8% पे तो एनपीवी 0 नहीं हो रहा है. ठीक है, 10%, 12%, 13% पे ट्राई करो. चेक एनपीवी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगेन यू हिट द bullseye. इसमें डिसीजन प्रोसेस क्या होना चाहिए? सो इफ योर IRR is greater than your WACC, you accept the project. You would at least want more than your cost, na? So your rate of return should be more than your WACC, your cost. ठीक है? If it is greater, then you accept. If IRR is less than your cost, you reject. ठीक है? सो अगर IRR को आपको लूज लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझना हो ना, तो IRR is nothing but the maximum return that project can generate. ठीक है? प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कमाने की कैपेसिटी, दैट इज आईआरआर. सो लेट से प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कमाने की कैपेसिटी इज 15%, बट आपका कॉस्ट ही 18% है. सो यू विल रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट. व्हाई? बिकॉज ये प्रोजेक्ट की कैपेसिटी नहीं है आपको 18% कमा के दे. मैक्सिमम दिस प्रोजेक्ट कैन अर्न अप टू 15%. ऐसा समझो आईआरआर को इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज. आर यू फॉलोइंग? हाँ, प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कमाने की कैपेसिटी इज 15%, 25%, एंड यू हैव अ कॉस्ट ऑफ 18%. सॉरी, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया. सो यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इन दिस केस, बिकॉज प्रोजेक्ट की कमाने की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है टू बेयर योर कॉस्ट. सो यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इन दैट केस. ठीक है? दिस इज द डिसीजन मेकिंग रूल फॉर आईआरआर. Now, if the meaning is understood, let's take some number, let's take some illustration or practical problem and see how to practically calculate IRR. So let's come to illustration number. See, this is profitability index. It is nothing but PVCI upon PVCO. Huh? This is nothing but PVCI upon PVCO. Greater than 1 accept, less than 1 reject. IRR. IRR is that discounting rate which equates the present value of inflow with outflow. Clear? Can you see the formula to calculate IRR? Right now, this formula looks very weird. ठीक है?
देखने में एकदम वियर्ड और एकदम डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट वंस वी सॉल्व द इलस्ट्रेशन ये फॉर्मूला एकदम सिंपल लगने लगेगी. ठीक है. राइट नाउ इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, but believe me, once we solve the illustration logically, this formula you will find it very easy. Okay, let's take illustration number 7. Illustration number 7. Calculate IRR of an investment of 1,36,000 which yields following cash inflow. सी अगेन हमें यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, विच इक्वेट्स योर पीवीसीआई विथ पीवीसीओ. ठीक है. सो लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 7. This is on page number 7.35 of your module. 7.35. ठीक है. So I told you to calculate IRR, you do trial and error method. So I personally, my first trial is always from 10%. I always start trial 1 since my childhood. जब मैं स्टूडेंट था तब से, while to calculate IRR मैं ट्रायल 1 हमेशा 10% पे लेता था. So I will continue that process. Discount when discounting rate is 10%. ठीक है. ओके. ईयर कितने साल है? 5 years है. सो ईयर 1, 2, 3, 4 and 5. Can I say again in this question they have directly given cash inflows, so no need to prepare that lengthy income statement. 30, 40, 60, 30, 20. 30. अरे यार क्या हो रहा है? 40, 60, 30, 20. ठीक है. So trial 1, I am taking discounting rate at 10%. So can you all calculate PVCI taking discounting rate at 10%? बोलो PVCI कितना आ रहा है when we take discounting rate at 10%? Please solve it on calcium and let me know. See, this is not a standard rule ना कि 10% पे ही ट्रायल 1 लेना है. यू आर फ्री टू टेक एट 15%, 8%, 7% जिस पे लेना हो. बट मैं पर्सनली आई ऑलवेज यूज टू टेक एट 10%. 138,318. Everyone is getting 138,318. इसमें से कैन आई से दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000. यस और नो? इस प्रोजेक्ट में हमें कितना इन्वेस्ट करना है? 136. सो एनपीवी कम्स टू पॉजिटिव कितना आया? 2,318. करेक्ट. तो टेल मी क्या मेरा 10% आईआरआर होगा क्या? इज 10% माई आईआरआर? नो, बिकॉज एनपीवी 0 आना चाहिए. यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया. Correct. So IRR, trial 1, we did not hit bullseye. We failed in our first trial. Understood? So we will move to next trial. Trial 2. You have two options. Either you can take trial 2 more than 10%, or either you can take trial 2 less than 10%. So how to decide? Next trial 10% से ज्यादा वाला रेट होगा कि कम होगा? बोलो क्या लग रहा है? ज्यादा लेना चाहिए कि कम लेना चाहिए?
higher. Gayatri is saying higher. Achal is saying come. See, NPV, present value and discounting rate are inversely related. Huh? Can I say ये एनपीवी को मुझे 213 से गिराना है और जीरो पे लाना है? Yes or no? I need to bring down the present value. So to bring down the present value, your discounting rate should be higher. जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट होगा उतना कम, उतना फास्ट प्रेजेंट वैल्यू गिरेगा. ठीक है. सो हायर डिस्काउंटिंग रेट शुड बी टेकन. हायर द डिस्काउंटिंग रेट, लोअर द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. यू नीड टू ब्रिंग डाउन योर प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पीवी को गिराना है तो डिस्काउंटिंग रेट शुड बी हायर. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? So next trial obviously should be more than 10%. Yes. So trial 2 is you can try at 12%, 13%, 14%, 11%. Any trial is okay. ठीक है. But I strongly suggest, not strongly suggest, but my personal opinion, what I used to do way back in my childhood days was I used to take a gap of 5%. So trial 2 I used to do when discounting rate was 15%. But again ये कोई standard rule नहीं है. You can take at 12% and see कि zero आ रहा है कि नहीं. You can try at 13% and see कि zero आ रहा है कि नहीं. बहुत बार तो आपको क्वेश्चन में से ही डायरेक्ट हिंट मिल जाएगी. क्वेश्चन में है ना, टेबल दिया होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10%, सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स देंगे, उसके नीचे डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 14%, ऐसा टेबल दिया होगा. सो इनडायरेक्टली दे आर गिविंग यू अ हिंट कि सेकेंड ट्रायल आप 14% पे करो. ए हाउ टू नो द स्टार्टिंग रेट? I told you starting rate you can try with any rate, but I always used to take at 10%. How to know? नहीं, you can start at 15% also. ठीक है. आगे जाके आपको समझ जाएगा कि स्टार्टिंग वाला रेट इज, कोई भी रेट लो कुछ फर्क नहीं पड़ता. स्टार्टिंग वाला रेट इज, कोई भी रेट लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. टाइम नहीं जाएगा. मैं बोल रहा हूं ना, 2 ट्रायल में आपका आंसर आ ही जाएगा. ठीक है. मैक्सिमम यू हैव टू डू इज 2 ट्रायल्स. 2 ट्रायल में यू विल 100% गेट योर आंसर. ठीक है. इट विल नॉट किल योर टाइम. सो ट्रायल 2 डिस्काउंटिंग एट 15%. So again here 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflow remains same, 30, 40, 60, 30, 20. 30, 40, 60, 30, 20. So PVCI at 15% comes to 122. Yes, from first trial you can decide ऊपर जाना है कि नीचे जाना है. Perfect. 122,880.22. PVCO investment in this project remains same, 1,36,000. So can I say NPV comes to negative. नेगेटिव कितना आया? हाँ आने दो ना, नेगेटिव चलेगा. 13,120. करेक्ट. तो टेल मी, क्या 15% मेरा आया रेट है? नो, बिकॉज एनपीवी शुड कम टू जीरो. जीरो नहीं आ रही है तो नेगेटिव में चला गया. सो कैन आई से माई IRR इज नॉट 15% ऑल्सो. बट अगर आपने ध्यान से कैलकुलेट किया हो एंड ध्यान से नोटिस किया हो तो कैन आई से, सी नाउ यू विल अंडरस्टैंड. जब हमने 10% लिया था तब एनपीवी वॉज पॉजिटिव 2318. जब हमने 15% लिया तब एनपीवी नेगेटिव 13,120 चला गया. बट कैन आई से एग्जैक्ट IRR तो नहीं मिला, बट एक रेंज तो मिल गई. इट लाइज समवेयर बिटवीन 10 and 15. यस और नो? एनपीवी 0
will fall somewhere between 10 and 15%. Yes, we got a range. Understood? So दो ट्रायल में आपको रेंज मिल ही जाएगी. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? अब मान लो 15% में भी पॉजिटिव आता तो वो आपको कैलसी पे ही पता चल जाता कि पॉजिटिव आ रहा है. सो यू वुड हैव नॉट रिटन दैट इन क्वेश्चन इन एग्जाम सोल्यूशन. कैलसी पे ही सॉल्व कर लेते हैं पहले कि क्या 15% पे नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव आ रहा है तो नो नीड टू राइट दैट ट्रायल इन योर सोल्यूशन. अंडरस्टूड? सो यू गॉट अ रेंज, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. सो ट्रायल वन ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव आए, ट्रायल टू ऐसा होना चाहिए जिसमें नेगेटिव आए. ठीक है, सो दो ट्रायल में आपको एक रेंज मिल जाएगी वेर IRR वुड बी लाइन. ए अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर टिल हियर? सो IRR, कैन आई से इट लाइज बिटवीन 10 and 15? मतलब इट इज ग्रेटर देन 10%, लेस देन 15%. ए अब नो नीड टू डू ट्रायल 3, इसमें ही डायरेक्ट अब आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी. अब ट्रायल 3 पे नहीं जाना है. ट्रायल 2 आई टोल्ड यू मैक्सिमम दो ट्रायल में यू विल गेट योर आंसर. नाउ हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट रेट, आई एम टीचिंग दैट ओनली नाउ. क्लियर? बट पहले आपको ये पता चली कि इट इज मोर देन 10% एंड लेस देन 15%. समवेयर इट लाइज बिटवीन अबाउट 10, लेस देन 15. करेक्ट? सो IRR technically is 10 plus something. Clear till here? Range तो मिल गई. Now our task is just to find this something. Are you all following? Because अगर ये पार्ट नहीं समझा तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा IRR में. So just comment on the chat box till here everything is clear about IRR. Clear. Gayatri clear. Gautami clear. Daksh clear. Okay. Everything is clear. IRR lies between 10 plus something. So again, जब something ढूंढना हो ना, payback period में we used interpolation technique, interpolation concept. यहाँ पे भी interpolation concept ही यूज करेंगे. अब pay attention very carefully. Now very important aspect of IRR comes. क्या हो गया? थैंक यू हो रहा है. See, can I say my first trial was at 10% and second trial was at 15%? ठीक है. हाँ, आई थिंक वो फॉर्मूला अप्लाई होगा हाई वैल्यू, बट ए डोंट जंप टू द फॉर्मूला. फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट फॉर्मूला. वो जो फॉर्मूला बनी है ना, हाई वैल्यू लो वैल्यू, वो इस लॉजिक से डिराइव हुई है. सो इफ आई इंक्रीज माई डिस्काउंटिंग रेट बाय 5%, ठीक है, जब सी पहले ट्रायल 1 वॉज 10%, ट्रायल 2 वॉज एट 15%, सो मैंने 5% रेट में इंक्रीज किया. यस और नो? तो एनपीवी में कुछ हलचल हुई. एनपीवी पॉजिटिव 2318 से नेगेटिव 13120 हुआ. आर यू फॉलोइंग दिस? जब मैंने डिस्काउंटिंग रेट 5% से बढ़ाया तो एनपीवी में बौछार हो गई. एनपीवी पॉजिटिव 2318 से नेगेटिव 13120 पे चला गया. तो कितने से गिरा एनपीवी? जब रेट 5% से बढ़ा तो एनपीवी में बौछार आ गई, वो गिर गया. कितने अमाउंट से गिर गया? 15518. 15518 इज करेक्ट, बट कैसे आया? समवन विल से सर 13120 माइनस 2318. कुछ लोगों का आंसर मुझे पता है क्या आया होगा. कुछ लोगों का आंसर आया होगा 13120 माइनस 2318. 10802 आया किसी का? सो दैट 10802 इज रॉन्ग. पहले कैन आई से जीरो पे गया होगा, ग्राउंड जीरो. फिर नाउ इट इज गोइंग और नेगेटिव बीनीथ द अर्थ. पहले पॉजिटिव 2318 से जीरो पे आया और नेगेटिव में चला गया, अंदर अर्थ के अंदर घुस गया.
So it decreased by 14, 15,438. Correct? Everyone understood till here? जब मैंने 5% से डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाया तो एनपीवी घबरा गया, बौछाल आ गई. इट फेल बाय सीधा 15,438. बट कैन आई से इट इज सफिशियंट फॉर मी कि एनपीवी जस्ट 2318 से गिरे? अगर वो सिर्फ 2318 से गिरता है, आई विल रीच टू 0 पॉइंट. I will reach to that point where NPV is 0. Sir, repeat in English as well. I am from Andhra Pradesh. Okay. When I increase the rate by 5%, see my trial 1 was at 10%, trial 2 was at 15%. Correct? So when I increase the rate by 5%, there was some earthquake in NPV. NPV fell from positive 2318 to negative 13120. ठीक है? So the effect of increasing this rate by 5% resulted in decreasing falling NPV by 15,438. Anil, did you understand this? Yes, drastic change. Just by increasing it by 5%, NPV fell by 15,438. Clear? But can I say I just want my NPV to fall by 2318? Yes or no? So that I can reach at this point of NPV is equal to 0. I don't want my NPV to fall by 15,438. My target is, my destination is to reach at 0 point. Okay? So it is sufficient for me if it falls only by 2318. Correct? So I just want my NPV to fall by 2318. So by how much percent I need to increase the rate? This is what interpolation technique does. So just simply cross multiply. कितना आएगा? 2318 into 5 divided by 15,438. By how much I should increase the rate? 0.7507%. Yes or no? 0.7507%. So that something is 0.7507. So IRR is somewhere around 10.7507%. Understood the interpolation logic? Clear everyone? With this chart gives some better clarity on IRR. When it was 10%, I got positive NPV of 2318. But when I increased this discounting rate by 5%, it drastically decreased by 15,438. But my destination is not to reach at this point. My destination is I want to reach at NPV is equal to 0. So I just want my NPV to get decreased to fall by 2318. Understood? तो उसके लिए मुझे रेट कितना बढ़ाना चाहिए? तो कैन आई से बाय इंटरपोलेशन इट कम्स टू 0.7507. So my IRR is 10.7507%. Are you following everyone? Clear? So can you see 10.71? So they would have rounded off nearest, or they have taken trial 2 at 12%. But can you see approx उतना ही आ रहा है, near to 10.7, 10.71, 10.75. ठीक है? So ideally ट्रायल के बीच जितना गैप ज्यादा हो ना, उतना अक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है? सो लेस द गैप बिटवीन ट्रायल्स, मोर द अक्यूरेसी ऑफ IRR. ठीक है? बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Examiner will not give you wrong for this. It is correct because principally you have done it correct. Clear? But IRR में एक ऐसा है, higher the range, the more the gap between two trials, less the accuracy. Less the gap, more the accuracy. ठीक है? But I strongly advise to all the students, maximum gap should be 5%. उससे ज्यादा gap नहीं लेने का. It means
फर्स्ट ट्रायल इफ यू डू इट एट 10%, तो सेकेंड ट्रायल सीधा 20 पे नहीं करने का, मैक्सिमम गैप रखो 5% का, ठीक है, सो दैट एक्यूरेसी पे इफेक्ट ना हो. क्लियर एवरीवन हाउ टू सॉल्व आईआरआर? Sir, very judgmental. It is subjective. I know it is subjective, but I'm telling you, na, take the maximum gap of 5%. फिर why you are taking 10 से सीधा 20%, 10 से सीधा 30%? You can take 2% gap, 3% gap as well. So let's say you, अच्छा, कुछ स्टूडेंट 11% पे भी करते हैं ट्रायल 2. So if you do at 11%, see क्या नेगेटिव एनपीवी आ रहा है कि नहीं. If you are getting negative NPV, then you are getting the range. If you are not getting negative NPV, ignore that trial. Don't write in your solution. Move to next trial. Are you following, everyone? So I simply personally advise, you are free to follow whatever you like, whatever is your subjective opinion. But my personal advice is start trial 1 at 10%. If no direct hint is available from the question about trial 2, then take a gap of 5%. ठीक है? No, you can directly solve on calcium. No need to prepare table. You can directly solve like this. PVCI at 10% directly solve. Less PVCO करो, NPV मिलेगा. Trial 2 when discounting rate is at 15%. PVCI at 15%, less PVCO, NPV. Then you will get the range. ठीक है? So understood the logic of IRR, how to solve that practically, वो समझा using trial and error method. Everyone clear? So इसी लॉजिक से फॉर्मूला बनी है. फॉर्मूला इज नथिंग बट IRR is equal to lower rate plus NPV at lower rate upon NPV at lower rate minus NPV at higher rate एक मिनट. Why is this thing getting into higher rate minus lower rate? ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ IRR. हमारा लोअर रेट इन आर प्रेजेंट एग्जाम्पल, कैन आई से लोअर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग वॉज 10%, हायर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग वॉज 15%. लोअर रेट पे हमारा एनपीवी कितना आ रहा था? एनपीवी एट 10% वॉज कमिंग टू 2318. NPV at 15% was coming to negative. Don't ignore the negative sign. 13,120. ठीक है? This was NPV at higher rate. So just substitute in the above formula. ये फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक you should understand. You should not rectify the formula. The logic is that interpolation. Are you following? अगर रट्टा मारा होता है फॉर्मूला तो देयर आर चांसेस यू विल फॉरगेट इन द एग्जांपल. बट लॉजिक एक ऐसी चीज है कि यू डोंट रट्टोफाई, यू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प इट इन योर माइंड. ठीक है? सो हायर, सो द लेट्स अप्लाई इन द अबव फॉर्मूला. लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट वाज 2318 divided by NPV at lower rate was 2318 minus NPV at higher rate is negative 13,120 into higher rate is 15, lower rate is 10. Just solve this on calci.
ये 1002 नहीं, minus NPV at higher rate is negative ना, so you have to take minus there as well. There is double minus. NPV at lower rate minus NPV at higher rate is negative 13,120. Screen is getting hang. See here it is NPV at higher rate. तो higher rate में तो negative 13,120 था. So negative cumulated. You sum up that. So 10.7507. Clear everyone? So इस formula का logic, the derivation of this formula is interpolation का concept. So now students, you have two options. Either you remember this formula, directly get IRR, or either you solve it by interpolation. Yes, minus minus plus, a simple lower level mathematics equation concept. Minus minus plus होता है. हाँ 10.75 तो वही आ रहा था. 10.7507, 10.7505. It's okay, that's fine. Clear? So this is the formula to calculate IRR. जिसको ये फॉर्मूला याद रखनी हो, they can remember, they can learn this formula and remember this. But फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक इज इंटरपोलेशन. आर यू फॉलोइंग? ये फॉर्मूला इंटरपोलेशन से ही डिराइव करी है. क्लियर एवरीवन? सो जिसने भी ग्रेजुएशन में फॉर्मूला पढ़ी थी या पढ़ी है, हैव यू लर्न द लॉजिक बिहाइंड दैट फॉर्मूला? Sir, after filtering as much as we can, then we need to apply formula, right, sir? Means I didn't understand your question. After filtering means क्या filter किया हमने? He means after trials. हाँ, after trials you can directly apply this formula, provided आपको ये फॉर्मूला एज इज याद रहे. अब इस फॉर्मूला में आप कुछ भी गड़बड़ कर दो तो योर आंसर विल बी रॉन्ग. मान लो ये हायर रेट माइनस लोअर रेट है, आपने यहाँ लोअर रेट माइनस हायर रेट लिख दिया, गॉन, यू आर गॉन, आंसर विल बी रॉन्ग. Because see, I always go with the logic. This is my personal opinion, my personal advice, how I have learned things. Because अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला रट्टा मारने जाओगे, आई एम डैम श्योर यहाँ कहीं पे आप गड़बड़ करोगे. लोअर रेट माइनस हायर रेट लोगे, यहाँ लोअर रेट लेना था, कभी कभार हायर रेट प्लस कर देते हैं. बिकॉज यू हैव रट्टोफाइड द फॉर्मूला ना, यू आर बीन ब्लैंक विद द लॉजिक. फिर यहाँ एनपीवी एट लोअर रेट माइनस हायर रेट है, तो यहाँ माइनस 13,120 नहीं लिखते, सीधा 13,120 लिखते हैं. सो ये यहाँ गड़बड़ करोगे. These all are the areas where there are chances of errors if you rectify, mug up the formula. हाँ, हायर एंड लोअर में कंफ्यूज होगा ही, बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द लॉजिक. लॉजिक ही नहीं समझा, रट्टा मारने जाओगे तो कंफ्यूजन होने ही वाला है. बट इफ योर लॉजिक इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, दिस इज द लॉजिक, then there are no chances of any error. Getting students? So now it is up to you, whatever you want to do. I have explained logic as well, I have explained formula as well. So IRR clear everyone? So technique number 6 also done. So now from 7 techniques we are done, we are through with 6 techniques. The only technique that is left now is modified IRR. So modified IRR is an upgraded version of IRR. जब भी सेम कॉन्सेप्ट का कोई अपग्रेडेड वर्जन आता है ना, तो ये अपग्रेडेड वर्जन पुराने वर्जन का कुछ डिफेक्ट को निकाल देता है, रिजॉल्व कर देता है. अंडरस्टूड? सो मॉडिफाइड IRR is a technique that would solve some defect, some disadvantages
ऑफ IRR टेक्निक. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? बट वो हम सीखेंगे, बाद में सीखेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल ब्रीफ इनसाइट्स अबाउट मॉडिफाइड IRR में क्या होगा. अगेन मॉडिफाइड IRR में हमें रेट ऑफ रिटर्न ही ढूंढना है. मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. You don't have to find any amount in MIRR. You have to find a rate of return which will resolve some defects of IRR. ठीक है. यूज ऑफ ट्रायल एंड एरर, इसमें भी ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज होगा, डोंट वरी. उसमें भी सेम मेथड, बट देयर इज सम डिफेक्ट, उसको रिजोल्व करना है, फिर ट्रायल एंड एरर पे जाना है. जैसे नॉर्मल पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक में छोटा सा डिफेक्ट था ना पेबैक पीरियड का, कि डज नॉट टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ने क्या किया, उस डिफेक्ट को पहले रिजोल्व कर दिया, फिर नॉर्मल पेबैक पीरियड टेक्निक जैसा क्यूमुलेशन किया एंड इंटरपोलेशन किया. ठीक है. तो इसमें भी कुछ डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को हम रिजोल्व करेंगे एंड वी विल सॉल्व MIRR. ठीक है. सेम प्रिंसिपल, बट यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला डिफेक्ट नहीं है, बिकॉज IRR में विच एनी विच वेज वी आर कंसिडरिंग, वी आर डिस्काउंटिंग द कैश इनफ्लोस. सो देयर इज सम another defect that we need to resolve over here and proceed. Clear? But don't stress, we will not learn today, we will learn some other concepts right now. Just brief up कर रहा था कि modified IRR में होगा क्या. Now IRR technique का decision making rule I explained you. If IRR is greater than WACC, you accept the project. If IRR means the maximum earning capacity of the project. If it is less than WACC, you reject the project. हाँ, yes, correct, Anil. Principally it is correct, but practically we need to see that through illustration. So we will take a detailed illustration of MIRR and we will solve, but not right now, maybe in some time or maybe in next session, I don't know. Clear? So now there are some special circumstances, some special situations where NPV and IRR technique will give conflicting results. दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, एनपीवी और IRR के बीच. Will give conflicting decision. ठीक है. सो ऐसी कुछ सिचुएशंस है, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है, ऐसे कुछ सिनेरियोज है जहां एनपीवी और IRR के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. मीन्स दे आर गिविंग कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन मेकिंग. जैसे लेट्स से देयर आर टू प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी. ठीक है. लेट्स से प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में से आपको एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है. ठीक है. सो लेट्स अज्यूम एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल 25,000, एंड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज पॉजिटिव 15,000. आइडियली दोनों सिलेक्ट करने चाहिए, बट इफ यू आर आस्क्ड चूज वन ऑफ दिस टू, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे? ए. करेक्ट. नाउ let's say IRR of project A is 15%, means project A can maximum earn 15% and project B has the capacity to earn maximum 20%. बोलो IRR के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा? B. So can I say there is fight happening between NPV and IRR? NPV टेक्निक बोल रहा है go for project A. IRR is saying नहीं, B होना चाहिए. Understanding? So there is conflicting decision making between two techniques. तो ऐसा conflicting results कौन से situations में आएगा? That situations we need to learn. Understood what I'm trying to explain? ऐसा कौन से scenarios में होगा जब IRR will give some other answer
NPV is giving some other answer. Clear the background? क्या सीख रहे हैं अब हम, क्या समझ रहे हैं? Okay, so situation number one. Situation number one. When size of two projects are different. When size of two projects are different. अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब दोनों प्रोजेक्ट की साइज में जमीन आसमान का फर्क हो, तब NPV and IRR will throw different answers. Hey, what do you mean by size of the project? So again, I am giving an example. Let's say project A के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए 2 लाख रुपया, प्रोजेक्ट बी के लिए चाहिए 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट. कैन यू सी अ ह्यूज वेरिएंस इन साइज इन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट? यस, साइज मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट. सो ऐसी कोई स्थिति होती है जब दोनों प्रोजेक्ट की साइज डिफरेंट हो, then NPV will give some other answer, IRR will give some other selection answer. Clear everyone? This is situation number one. Followed? अच्छा, इसको आपको डिटेल इलस्ट्रेशन से समझना हो ना, तो मॉड्यूल में they have given that as well. You can solve it as an homework and you can check. Come to page number 7.45. Conclusions in following scenarios. Okay, there are some scenarios under which NPV method and IRR method will reach two different conclusions. ऐसा कौन से सिनेरियोज है? तो सिनेरियो वन, साइज डिस्पैरिटी. साइज डिस्पैरिटी मींस size of two project is different. Disparity means different. ठीक है? So they have also proved this through an illustration. Illustration number 10. Project A was 1 lakh का, प्रोजेक्ट B was 3 lakh का. ठीक है? तो दोनों प्रोजेक्ट का उन्होंने NPV कैलकुलेट किया, दोनों प्रोजेक्ट का उन्होंने IRR कैलकुलेट किया. ठीक है? This you can try as an homework because now we know how to calculate NPV. Now we also know how to calculate IRR. ठीक है? So assuming ये सब हमने कैलकुलेशन कर दिया, come to page number 7.47, overall position. सब कैलकुलेशन NPV दोनों प्रोजेक्ट का कैलकुलेट कर दिया, IRR दोनों प्रोजेक्ट का कैलकुलेट कर दिया, and the conclusion is this. As per NPV, project B should be selected. But as per IRR, can I say project A is having more earning capacity? Followed? So this is situation number one, scenario number one. Okay, now I will not explain a detailed illustration. Now you can solve this illustration as an homework. Because now we have already learned how to solve NPV. Now we have also learned how to solve IRR. यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कौन सी स्थिति में, अंडर विच सिनेरियोस IRR एंड NPV विल फाइट, विल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस. ठीक है? क्लियर? सो कैन यू सी द कंक्लूजन? देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन टू मेथड्स. ठीक है? सो दिस वाज सिनेरियो नंबर वन. सिचुएशन नंबर टू. when timing of cash inflow generation is different. Gautami, we will learn that concept as well, but at a later stage of this chapter. First, just understand the situation scenarios where there would be conflicting result. जब लाइफ अनइक्वल होती है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सी एट अ लेटर स्टेज. सो सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लो जनरेशन इज डिफरेंट.
यानी कि अगेन टेकिंग सेम एग्जांपल प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, ये दोनों का आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज सेम, साइज इज सेम, बट अब देखना, लेट्स से बोथ द प्रोजेक्ट आर ऑफ 3 years, बट अब ध्यान से देखना, कैन यू सी सम डिफरेंस इन जनरेशन ऑफ कैश इनफ्लो बिटवीन प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी? दोनों की साइज सेम है, बोथ रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख, both are of same life as well, 3 साल 3 साल, but project A is generating majority of cash inflow at later stage of its life, and project B in the contrary is generating more cash inflow at initial stage of its life. Yes or no? The proportion of cash inflow for project A is more at its later stage. वो बुढ़ापे में ज्यादा पैसे कमा रहा है, एंड प्रोजेक्ट बी इज अर्निंग मोर इनफ्लो एट इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, यंग एज में ज्यादा पैसे कमा लिए. सो ऐसी कोई सिचुएशन होती है, अगेन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स. कैश फ्लो वेरिएंस, yes, correct. So this is situation number 2, where the timing of cash inflow generation is different for two projects. One project A is generating substantial proportion of cash inflow at later stage of its life, yani ki in its old age. But there is, on the contrary, another project which generates substantial major amount of cash inflow at its initial stage of life, at a very young age. Understood, everyone? Are you getting it? So this is a scenario, another scenario where your NPV and IRR will give conflicting result. Clear? So situation number 2 in module is time disparity in cash flows, यानी कि टाइमिंग डिफरेंस इन कैश फ्लोस. क्लियर? सो देखो, project X is 250, project Y is 3 lakh, so somewhat similar, same size project, not a much difference. But if you see project X is generating more cash inflow at beginning of its life cycle, शुरू में वो ज्यादा पैसे कमा रहा है. But on the contrary, project Y, can you see it is generating more cash inflow at its later stage? शुरुआत में कम, फिर ज्यादा. प्रोजेक्ट एक्स में कैसा है? हाई एट इनिशियल स्टेज, लो एट लेटर स्टेज. ठीक है? सो दिस इज टाइमिंग डिफरेंस. सर, इज देयर एनी चांस ऑफ क्लैश इवन इन केस इनिशियल? एक कैश फ्लो अगर यूनिफॉर्म है, साइज इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, they both will give same NPV, they both will give same IRR. So there will not be any conflict. Everything is same. See, agar sab kuch, if everything is same, can I say they both are mirror image? So if you see yourself in mirror, so can I say aap hi dikhoge mirror mein? So everything would be same. Your size of hands would be same, your face cut would be same. So in that case, IRR and NPV would be same, because they both are exactly mirror image of each other. Xerox, ditto. Clear, Anil? So if you see, Anil, if you see yourself in the mirror, क्या आपकी हाइट बढ़ जाएगी क्या? Your height will increase, or it will remain same in the mirror as well? It will remain same na in the mirror as well. So in that case, the case that you are trying to say is just a mirror image of each other. A cash flow are uniform. By cash flow are uniform, I mean they both are generating same cash inflows. Huh? This is what I have assumed. Huh?
by cash flow are uniform means same cash flow for project X as well, same cash flow for project Y as well. अमाउंट में भी चेंज नहीं है, ऐसा मैंने समझा है. So this was situation 2. Situation number 3. Situation number 3, when life of two projects are different. When life of projects are not same, they are different. Okay, again continuing with same project A, project B. Project A, let's say life of project A is 3 years. Life of project B is 7 years. So if there is some difference in the life of the project, then again NPV technique will give some different answer. IRR will give some different answer. Clear? So when life is not different, when size of project is different, when timing of cash flow generation is different, ये तीन situation में NPV and IRR will fight internally. NPV will say go for project A only. IRR will say no, I don't agree with you. Project B should be selected. Clear? These are the 3 scenarios. So again, in ICAI module, has explained scenario 3, has proven scenario 3 with an illustration. Can you see disparity in life, unequal life? Project A, 5 lakh invest किया, first year में you get inflow, project A closed. Life is 1 year. But project B, you invested 5 lakh, you generated cash inflow for 3 years. Life is 3 years. Understood? So this is unequal life situation. Are you following? So if you see, if you calculate NPV and IRR in your homework, the overall position is NPV of project B is higher, IRR of project A is higher. Clear? Followed till here? So these are different situations where NPV and IRR will throw conflicting results. Any doubts, any confusion in this concept? कौन से 3 scenario है? Size difference, life difference, and timing of cash flow difference. ठीक है? Are this type of, I don't know, I'm not the one who sets the paper, but it can come in theory as well. Explain different scenarios where NPV and IRR will show conflicting result. Okay? Anything can come in exam. You should be through with the concepts. It can come in theory as well. They can ask in practical as well. I don't know. Yes, size, time, life. STL. Yeah, in those cases, practically what happens? NPV is the most practical technique. So फिर ज्यादा weightage NPV technique को दिया जाता है. In that case, we give more significance, more importance to NPV technique because it is more practical than IRR technique. ठीक है? IRR says what? Maximum earning capacity that project gives. ठीक है? So maximum कुछ भी देने दो ना. Maximum project can give anything. I am of least concern. What I desire is NPV, correct? NPV, under NPV, we take our desired rate. Project may give maximum whatever it wants to give. I am least concerned. I want my desired rate. So NPV is more practically accepted technique. Okay? In that case, practically, if there is some contradiction, what I have experienced in my personal financial life is we give more significance to NPV technique. Okay? So this another concept of special circumstances is also done. Special circumstances, special scenarios was all about situations where NPV and IRR will fight within themselves. Let's move to another concept of this chapter, concept called capital rationing.
concept of capital rationing. Have you heard of this term before anywhere in your life? Ration, never. Never. Okay. Any other students? Capital rationing. Rationing, ration, capital rationing. Achal, you have heard. Never. Amar, never. 80s Purthirani. No, sir. Okay, Achal. So, what have you understood by the term capital rationing? Economics. Anil have heard this in economics. Okay. So, those students who have heard, at least try what you have understood. Let me know what you have learned by the term capital rationing. GDP. GDP में capital rationing? I don't know. Yes, Achal, you can try. What have you understood by the term capital rationing? I will to explain in a very layman language so that everyone, even non-finance student can understand. I will explain in that terminology. Rational behavior of no, 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 no. You are going in another track. Not a rational behavior of consumer. No, that is not capital rationing. You are completely going in different track, Anil. Achal, somewhat, yes, you are on the right track. So capital rationing is a situation. Now, those who have not heard, those who have heard, listen carefully. Capital, yes, correct. Kambira Kajna. I pronounced, I don't know how correctly I pronounced, but you are correct. Capital rationing is that situation जहां पे funds are limited. You have limited funds, but you have multiple projects with lucrative opportunity. You understand by the term lucrative, ना? There are multiple projects. सब फायदा करवा सकता है, सब अच्छा कमाई करके दे सकता है, but you don't have enough funds to invest in all the projects. Understood? That is capital rationing situation. Rationing means restriction. Rationing means restriction, limitations. Limitation in capital. Understood? So it means there are multiple lucrative projects जो बहुत ही अच्छा खासा आपकी कंपनी को फायदा करवा सकता है. That is lucrative. But there is restriction in funds. Okay? So you cannot, since you have restrictions in funds, you cannot invest in all the projects. Okay? Are you following? Everyone? So let's say there are multiple projects A, B, C, D, E. All the projects are having positive NPV. Okay? So ideally, as per NPV technique decision making rule, ideally you should accept all the projects. You should invest in all the projects because all the projects are lucrative, are having positive NPV. It will increase the wealth of your shareholders. But सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके उतने पैसे नहीं है जेब में. अंडरस्टूड? दैट इज कैपिटल रैशनिंग सिचुएशन. फॉलोड एवरीवन? सो उस केस में which project should be selected? That is the whole capital rationing concept. Clear? Multiple projects, all with lucrative opportunities, all with positive NPV. So ideally, all projects should be selected, but fund restriction है, fund limitation है. So can I say सारे प्रोजेक्ट तो नहीं ले पाएंगे? We cannot undertake all the projects. So we have to find some way to select best of this. Yes or no? सारे नहीं ले पा रहे. If we are not able to select all the projects, then we have to select some of the best projects. Clear? So that decision making now we have to learn.
But first of all, capital rationing, what it means conceptually. Did you understand that? Because if you don't understand that, if you don't get that, तो आगे कुछ मतलब नहीं है. Okay, so now we have to learn how to decide which project should be selected from A, B, C, D, E. Yes or no? अब इसमें से we have to select some best of the best projects. So उसके लिए we have to give rankings to the project from top to bottom. Are you following? To select amongst the project, इसमें से ही कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं. For that we need to give rankings to all the projects from top to bottom. Are you following? So let's assume rank 1 comes to project B, rank 2 comes to project E, rank 3 comes to project C, rank 4 to D, rank 5 to A. So this, the best of all is B. Okay, so take project B. Still you have enough funds, then second best is E. Take project E. Acha, still you have enough funds, third best is C. Take project C. Are you following? But now I don't have funds. Ignore project D and A. Followed? Yes, you will check higher NPV, but again it will depend on the type of the project. What type of the project it is, it will depend on that. Ideally, it should be on NPV. Ranking should be given based on NPV. जिसका NPV ज्यादा, rank 1. जिसका NPV second best, rank 2. Third best project NPV, rank 3. Likewise, you should give ranking. But again, not 100% it will be based on NPV. You have to decide based on the kind of project it is. ठीक है? Everyone understood till here? Capital rationing is the concept of limitation of funds. You have multiple lucrative options available. You have to select the best one. Best one means it can be 1, 2, 3, 4, 5, anything. ठीक है? But you have to select amongst the group of projects some of the projects. ठीक है? कुछ projects select करने because there is fund restriction. So again, how to give rankings will depend on the type of project. You have to see whether the project is, ideally project are classified into two types. One is divisible projects and another is indivisible project. हाँ वही समझा रहा हूं. Is half प्रोजेक्ट पॉसिबल और नॉट, वो सारा कंफ्यूजन आपको ये टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में क्लियर हो जाएगा. योर डाउट विल गेट कवर्ड इन दिस क्लासिफिकेशन. ठीक है? सो प्रोजेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, divisible project, indivisible project. So check whether your projects are divisible or not. Divisible means part project can be taken. Part project can be taken. ठीक है? Indivisible project means part project cannot be taken. ठीक है? Now what do you mean by part project can be taken, part project cannot be taken? So let's understand through example. Let's say your capital limitation is of 5 lakh. 4 lakh already use हो चुके हैं. You have funding of 5 lakh, 4 lakh is already used. ठीक है? So now 1 lakh is left. ठीक है? 1 lakh is balance left for investment. So let's say 3 project ले लिए. Now the next best project is project number D, which is costing 5 lakh. ठीक है? But you have only 1 lakh and you have to take, you need 5 lakh if you want to take entire project. Yes or no? So if the project D is divisible, it would mean you have 1 lakh, then take 1/5 of the project D. Are you following? Part is possible. Tukda lena is possible. Are you following everyone? If you have 2 lakh,
take 2/5 of project D. If you have 3 lakh, take 3/5 of project D. Understood? So accordingly, NPV भी आपको 3/5 मिलेगा. So divisible project means टुकड़ा part can be taken. अगर आप पूरा land नहीं खरीद रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो, you don't have enough funds to buy entire land, take some टुकड़ा of land, buy some टुकड़ा of land. Are you following everyone? That is part project is possible, divisible project. But if the project is classified as indivisible, it means लेना हो तो पूरा project लो, वरना don't come with me. So in this case, in scenario 2, project D, let's see if it is indivisible. So project D says, if you have 5 lakh with you, then only come to me. Otherwise, मुंह दिखाई मत करना, चले जाना किसी और के पास. Are you following? Understanding what is divisible project and indivisible project. Divisible project means to the extent of fundings you have, take the project. ठीक है, उतना टुकड़ा आप खरीद लो. But if the same project is indivisible, it means खरीदना है तो पूरा project लेना पड़ेगा. Or else you cannot take project D, move to project E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Understood? So लेना हो तो पूरा project लो. That is what indivisible project says. If you want to come with me, then come with 5 lakh. This is what project D is saying. Here project D is saying if you are having 1 lakh, come with 1 lakh. I'm okay with that. If you have 2 lakhs, come with 2 lakhs. I'm okay with that. Don't worry. Followed everyone. So सबसे पहले you classify the project into 2 types, divisible, indivisible. If and then give the rankings. So if the projects are divisible, you give the rankings based on NPV upon PVCO. On 1 rupee of investment, how much NPV your project is generating, that formula you have to apply. Okay? Give rankings, calculate NPV by PVCO for all the projects, rank them from best to worst. Understood? So if projects are divisible, you give rankings based on NPV per 1 rupee of investment. Are you following? So जो project 1 रुपया लगाने पे ज्यादा NPV दे रहा है, that will be ranked as 1. Likewise, you will give rankings to other project. Followed, then select कौन से project हम ले सकते हैं. Hey, are you understanding, everyone? So if projects are divisible, ranking should be given based on NPV per 1 rupee of investment in the project. And if projects are indivisible, then as you rightly said, give rankings purely on NPV. ठीक है, जिसका NPV ज्यादा रैंक 1, जिसका NPV सेकेंड बेस्ट रैंक 2, जिसका NPV थर्ड बेस्ट रैंक 3. Sir, if second project is indivisible and third project is divisible, then can we take up third best project? Yes, you have to move to third best only. Yes, in that case, you can take divisible project, which is third best. But understood? So again, I'm summarizing the whole capital rationing concept. First of all, it means there is a fund restriction. There are multiple projects, all with positive NPV. But since there is fund restriction, you cannot take all the projects. You have to select some of the best projects. Are you following? So best projects, कौन से लेने के? So you have to give rankings. Rankings again will be based on what? So it will be based on the type of project. If project is classified as divisible, यानी कि if part is possible, give rankings based on the formula of NPV per 1 rupee of investment. If you invest 1 rupee in the project, how much NPV it is generating? That is NPV upon 1 rupee of investment concept. If
project is completely indivisible. यानी कि part project cannot be taken. Give rankings purely on NPV that you already rightly said earlier. Clear? Everyone? Yes, it absolutely. It depends on our availability of funds and rankings of the project. Sir, what if NPV is equal and we only have some ideas money? Hey, so in that case, you compare other factors between two projects. Again, same example. If one project is to be taken in the country where we are having war, you will not take that, although the NPV is same. Okay? So there is some another country with which we are having a very good cordial relation. So we will move to that country. So वैसे decide होता है comparing other factors, comparing risk, other factors. Understood? So let's तो फंडिंग हमारे पास नहीं रखेंगे. We will select. We will. So if that. So Daksh, in that case, let's say if you have 1 lakh and the project is indivisible, okay, and project requires 2 lakh of funding. So try and find some project which requires 1 lakh. That effort you should play. You should do. Understood? In practical world. Try, go and find that project EFGHIJKL जो 1 lakh का exact हो. अंडरस्टूड? या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लो जो डिविजिबल हो. गेटिंग दक्ष? Okay, so now let's try and solve one illustration on capital rationing concept, which is covered in your module, page number. Can you all search? We have still 15 minutes left, so जितना हो सकते उतना करते हैं. बाकी का we will continue in next session. Hey, can you search capital rationing so that I can directly come to that place? Capital rationing. Capital rationing, yes. Special 7.53. Yes, illustration number 13. So everyone come to page number 7.53 of your module. Let's now understand entire concept taking a practical illustration. Illustration number 13. Page 7.53 of your module. Shiva Limited is planning its capital investment program for next year. Okay. It has 5 projects, all of which is having a positive NPV. Okay. So can I say ideally, see आप सब project का NPV देखो, every project is having positive NPV. So ideally, if you are rich enough, select all the project. Okay. Cutoff rate is 15%. The investment outflows and present value being as follows. So this is the investment amount required for each project. Project A requires 50,000. Project B requires 40,000. Project C 25. So let's, for the time being, assume we are rich enough. So can I say I can invest in all the projects? And अगर सारे project में invest करता हूं, how much would be my funding needed? कितना पैसा लगाना पड़ेगा? It will be 50 plus 40, 90 plus 25, 115 plus 30, 145 plus 35, 1,80,000. Correct? So if you are rich enough, if you have sufficient funds, so and if you have 1,80,000 with you, select all the projects. Clear? But now the company is saying no, we are not rich enough. We are thoda garib. We have only 1,20,000 with us. Now tell us, इसमें से कौन से project select करें? Clear everyone? Understood the question? But again, कौन सा project select करें? For that we need to give rankings. And to give rankings, we need to classify what kind of projects are these. Correct? कौन सा type of project है divisible and indivisible है, that we need to check over here. So now the question is saying you are required to illustrate the return from the package of projects within capital spending limit. The projects are independent of each other and divisible.
Are you following? So question is saying the projects are divisible. Part project is possible. ठीक है, तो ranking will be based on NPV per 1 rupee of investment. Clear? In current illustration, projects are divisible and hence rankings shall be based on NPV per 1 rupee of investment. ठीक है? So can we calculate NPV upon PVCO for all the projects? अरे यार, NPV upon PVCO. ठीक है, सो प्रोजेक्ट ए बी सी 5 प्रोजेक्ट है, डी एंड ई. कॉलम 2 वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. व्हाई इज दिस हैंगिंग यार? ये हैंग क्यों हो रहा है? एनपीवी अपॉन पीवीसीओ. प्रोजेक्ट ए का एनपीवी इज हाउ मच? 15,400. इन्वेस्टमेंट इज 50,000. करेक्ट? So 15,400. There is some technical glitches happening in this notepad right now. But ठीक है, we need to manage. 15,400 divided by 50,000. बोलो, 1 रुपया लगाने पे एनपीवी कितना है? ओ यू ऑलरेडी सॉल्व. 0.308 point. खुशी, आई एम जस्ट कॉपिंग योर आंसर. Point, I'm believing it is correct. 0.404, 0.3733 and 0.5514. Other students, you also check. Yeah, if question is silent, you are free to assume whether project is divisible or indivisible. The ball is in your court now. Just write a note about your assumption. ठीक है, ये तो कहना है, से रैंकिंग विल बी हायर द बेटर, बिकॉज 1 रुपया लगाने पे जितना ज्यादा एनपीवी मिले उतना अच्छा है. यस और नो? सो रैंकिंग विल बी हायर द बेटर. सो टेल मी, रैंक 1 किसको जाएगा? रैंक 1 goes to project E because it is having higher NPV per 1 rupee of investment. Clear? Rank 2, second best is project B, third best project C, fourth best project D, and fifth best last is project A. Clear? So this is the ranking. 1 2 3 5 2 3 4 1. So now arrange the project in these rankings. Now the real game starts. Arranging the above projects based on its rankings. Now the real game starts. Selection का अब कौन से प्रोजेक्ट is selected, कौन से reject. Now that game starts. Ranking दे दिया, अब selection process. So can I say it was E, B, फिर आई गेस सी था. सी था कि डी था? लेट मी चेक. यस, सी था. ई बी सी डी एंड ए. डी एंड ए. Clear everyone? So I arranged the projects based on its rankings from best to worst. ठीक है? So if we take project E, tell me how much investment amount will be required.
प्रोजेक्ट ई लेने के लिए कितना पैसा लगेगा? हाउ मच इज द आउटफ्लो नीडेड टू टेक प्रोजेक्ट ई? ओके, 35,000. Hey, can I say you have 1,20,000? So can I say in other words you can take entire project T 35,000 use हो जाएगा? Hey, are you following everyone? Correct. So how much NPV project E is generating? Tell me NPV that project E is generating. If we take entire project E, can I say we will earn an NPV of 19,300? 19,300. So 1,20,000 we have the amount in our pocket. We used 35,000 for project E. Second best is project B. It needs 40,000 rupees. Okay. So do we have enough funds to take entire project B? Yes. 120 में से 35 ही use हुआ है. You can still take entire project B. Correct? So project B पूरा लिया तो NPV कितना जनरेट करके देगा? It will generate an NPV of 18,700. 18,700. ठीक है. Next ranking was project C. Project C cost 25,000. Do we have enough funds to take entire project C? Yes, we have sufficient funds. So if you take entire project C, can I say you will generate entire NPV of how much rupees? Project C में कितना है? 10, 11,200 की 10,100? 10,100 है, not 11,200. Project D में 11,200 है. So project C will generate 10,100. Clear? Now from 1,20,000, 35,000 plus 40,000 plus 25,000 is already used. कितना यूज हो गया? So 40 plus 30, 70 plus 20, 90. 1 lakh is used. Now the funds that you are left with is only 20,000. 1 lakh used from 120. So project D, अगर पूरा project D लेना हो, can I say you should come with funding of 30,000? So project D saying, बोर्ड लगा है project D ने, लेना है तो 30,000 लाओ. But I am saying no, I only have 20,000. Project D is saying no worries, I am divisible project. Understood? 2/3 ले ले. 20,000 है तो take 2/3 of the project. ठीक है? So can I say for project D, we will invest only 20,000 in that project. It means 2/3 of the project D is taken. So can I say NPV भी 2/3 मिलेगा पूरा प्रोजेक्ट का? पूरा प्रोजेक्ट डी लेते हैं. If we had taken entire project D, then you would have earned 11,200 of NPV. But since you are taking 2/3 of project D, so 2/3 of NPV you will earn. Clear? So 11,200 into 2/3, 7,467. Hey, do we have enough funds to take project A? No. So project A will be ignored. So can I say on investment of 1,20,000, you will generate total NPV of 19,300 plus 18,700 plus 10,100 plus 7,467. कितना आया? On total investment of 1,20,000, we would earn NPV of 55,567. 55,567. Clear how to do decision making under capital rationing situation, and that too when the project was classified as divisible project. Followed everyone? Step 1, check the type of project. Since it was divisible, so you need to give rankings based on the formula of NPV upon PVCO. Second, arrange the project from best to worst. Third,
utilize the amount in the best of the projects. C for the balance left. The balance left should be accordingly invested, should be proportionately invested. Okay? Should be pro rata invested. And accordingly, NPV will be generated pro rata. Clear everyone? If the project is divisible. अगर यही same project indivisible होता, so what would have changed? So can I say first of all, change would have been done in the method of ranking? Yes or no? यहाँ पे we will not apply this formula. We will straight away check the NPV of all the projects. जिसका NPV best will be ranked one, and accordingly we will give rankings based on NPV for other projects. ठीक है? So in that we should have went for project A. ऐसा नहीं. We should first calculate a revised rankings based on NPV technique. ठीक है? From top to bottom, and accordingly हमें decide करना है which project should be selected. Clear everyone? Did you understand the concept of capital rationing? So in today's session, we covered special adjustment about working capital. Working capital was outflow at the beginning of the project, but at the end of the year, at the end of project's life, it will be an inflow because it will get released. Second special adjustment, we learned about common allocated cost. So common allocated cost, अगर वो increase नहीं हो रहा है by taking the project, then you ignore. But if common cost is increasing because of taking up the project, then to that increase, to the extent of that increase, it is relevant for your project. Third, we solved some question on NPV. Fourth, we learned about IRR. IRR is a rate of return. In fact, a discounting rate which equates PVCI equal to PVCO. In other words, where NPV is zero. Okay? Fifth, third, next we learned special circumstances where there is a fight between NPV and IRR. There are three situations: size different, life different, timing of cash flow different. ये तीन scenario में NPV and IRR will fight. Fourth, we learned the concept of capital rationing, a situation where there is a restriction of funds, but multiple projects are available with positive NPV. So in that case, you have to select the bestest projects. Bestest projects will be selected based on the rankings. Rankings will be given based on the type of the projects. Clear today's session? I hope today's session also added some value in your academic life. Sir, क्या समझा नहीं? What is your question? I am not able to understand. We then rank remaining indivisible project based on NPV divided by PVCO. If the project is indivisible, then ranking has to be based on NPV, not based on NPV divided by PVCO. ठीक है? NPV divided by PVCO ranking should be used for divisible projects. So yes, Daksh, is it related to this chapter? You can ask, or today's session you can ask. But quick, already the time is up, and it's weekend, especially Saturday evening. So all of you would having some social thing. Even I have some social thing. That is not in my hands. So that is how institute. That is the decision of ICAI. So I am not the right person to answer this. Okay? Okay, so tech team, let's end today's session. I hope students, all of you understood, all of you are enjoying the sessions on investment decision. At least it is creating some value addition in your academics. So now, Anil, you are able to answer them, right? I have explained you the logic behind that. So now, Anil, you are in a position to give them a good response. Okay, tech team, we can end today's session. Thank you all.
and happy weekend. Thank you, sir. Yeah, thank you. Recording stopped.